Yes, I hope everyone has joined the session and also posted the attendance in the chat box. So let us start with the design of a continuous one-way slab. So I think you have already designed a continuous beam, right? Or maybe analysis of that. Am I correct? Analysis of continuous beam, I think you must have done in the previous semesters. So similarly, we have continuous slabs also. So continuous slab कैसे design करेंगे? So let us see. Just give me a moment. Okay, so let me share my screen now. Okay. So this is the question which we are going to do now. So the question is a room of size 12 meter by 8 meter is supported on 300 wide beams which are placed center to center, spacing of 3 meters. Design the slab to carry a live load of 5 kilonewton per meter square. So we have to And note it. We will note it down, no? uh, first what you do, first you just pay attention, go through the entire problem, because simultaneously you won't be able to do this. So you can just listen at this point, Okay, sir. because ultimately I'm going to share this with you on Moodle. Okay, sir. Okay. So first let us try to understand this, and then you can make a note of this. So the question is, design the slab to carry a live load of 5 kilonewton per meter square and floor finish of 1.5. Consider M20 and Fe415. So this is the question. So I have just drawn the figure for that. So this is 12 by 8 meters and supported on 300 wide beams. The width of the beam is also given to us, and the center to center spacing is also given to us. So this is the center to center spacing. So this is nothing but a one-way slab. So this is the section of it. So this is the center to center distance, that is 3 meters. I hope this diagram is clear to everyone. So now let us see the design procedure for this. So the first step will remain the same as it is, to find out the depth of the slab. So while calculating the depth of the slab, we know how to find out the depth of the slab from the deflection criteria, which is given by D is equal to L effective upon 26 MFT. Okay, so if you remember yesterday what we have done, this equation is for a continuous slab. For a simply supported slab, this is 20 MFT. Okay. So now here L effective is already given to us, center to center distance. So if you remember, for a continuous slab, the L effective is taken as the center to center distance. Okay, so only in case of simply supported slab, we have to take the least of the two conditions, that is LCC or LC plus D, whichever is less. So here there is no such condition. So we can directly take L effective as the center to center distance. So assuming MFT modification factor as 1.3. So yesterday also we have done this. We have assumed modification factor 1.3. Okay, so this you can assume 1.3 to 1.6 also, but on the safer side, I am assuming 1.3. So this modification factor, as I've already told, it depends upon the tension reinforcement. So since we always design an under reinforced section, so for that, first we have to select a suitable percentage. Okay, since we have not yet designed the slab, so we don't know the percentage. So now we will assume a suitable percentage, and on the basis of that, from the graph, we will assume this modification factor. So considering this as an under reinforced section, we will consider percentage between 0.25 to 0.4 percentage. ठीक है, तो उसके हिसाब से ये MFT मुझे 1.3 मिला है. ठीक है, I hope this is clear. So Yes, in sir. some, yes, in some textbooks you will see that this MFT will vary. So they must have taken some different value, 1.6, 1.5, something like that.
So 1.3 is always on the safer side, so you can always bank on this. So now let us find out the effective depth of the slab. So effective depth is L effective upon 26 MFT. So this is the value, 88.75. Now we will assume suitable clear cover and the diameter of the bars. So as I've already mentioned, you can assume as per your judgment whatever the diameter of the bar. So the range I've already given, it should be between 8 to 12 diameter for your slab design. So I have assumed 10 diameter bars. So in that case, the overall depth will become this effective depth plus clear cover plus this diameter by 2. So we got the overall depth of the slab. Okay. So now we can approximate it this to in multiples of 5. So let us provide an overall depth of 125. So in that case, the effective depth will change. So effective depth will become 100 Is this clear to everyone? The same thing which we did yesterday also. Yes. Yes, sir. Okay. So now let us move on to the next step. So here the next step will remain the same, calculation of loads. Okay, so calculation of loads, first I will find out the self weight of the slab and then the live load, then the floor finish. So here you can see what I have done. I have calculated the total dead load and the total live load separately. Okay, so why I have done that we will see now. So total dead load kitna hai apart from the live load, this plus floor finish, and I have then factored that load. So this becomes 6.94. एंड देन टोटल लाइव लोड कितना है 5 दिया है तो उसको फैक्टर किया तो टोटल लाइव लोड भी मिल गया ठीक है सो नाउ व्हाई आई हैव डन दिस सेपरेटली सो लेट अस सी so as far as your continuous slab design is concerned we will use the Iscode approach okay so Iscode has given a simplified approach to design continuous one way slabs so Iscode has given us the coefficients to find out the bending moments at different points. So let us see when this is applicable. Okay, so the coefficients of bending moment and shear force given in IS code is applicable only when there are more than two spans. Okay, so this is important. You should know this. When there are more than two spans, then only we can use these coefficients. And also the percentage difference between the span is less than 15 percentage compared to the longest span. ठीक है percentage difference ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये within this 15% होना चाहिए. Yes, all of you, please mute yourself. Yes. So now let us see this in the IS code now. So in the IS code on page 36, let us see the dead load and the live load coefficients. Okay, so this on page number 36, you can find this table, the bending moment coefficients. Okay. So here you can see in the first paragraph, unless more exact estimate are made for beams of uniform cross section, which support substantially uniformly distributed loads over 3 or more spans, which do not. ठीक है तो यही मैंने सेम चीज उधर नोट में मेंशन किया है. So over 3 or more spans which do not differ by more than 15 percentage of the longest. So the bending moments and the shear force can be used from these tables. So the bending moment coefficient and the shear force coefficient. So now let us see how to use these coefficients to find out the bending moment and shear force. So in the last problem जैसे हमने bending moment and shear force directly calculate किया था because it was a simply supported slab. So now here it is a continuous slab. So in this case, this is the simplified approach given by IS code. So now let us see how to find out this. So calculation of bending moment and shear force. So this you can find on page 36 table 12. So first let us find out the bending moment. Okay, so this you know that for a continuous beam and slab, the bending moment will be hogging at the supports and sagging at the span, mid span. So first we'll find out dead load coefficient or live load coefficient. ठीक है dead load coefficient, let us first understand this table. ठीक है ये table में this table will give me the bending moment coefficient. So bending moment coefficient they have given actually separately. Dead load के लिए अलग coefficient है और live load के लिए अलग coefficient. So that is the reason at the beginning I separated that dead load and live load.
So let us understand this table. So for dead load and imposed load, ठीक है, जो मोमेंट्स है वो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए मेंशन किया है. सो फर्स्ट क्या है, एट द एंड स्पैन. ठीक है, एंड स्पैन के लिए +1/12 है, और इंटीरियर स्पैन के लिए +1/16 है. और जब भी सपोर्ट मोमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए, so the at the support next to the end support it is -1/10, and at the interior support it is -1/12. ठीक है, so now we will just correlate this, so you pay attention, or if you have the soft copy of the IS code, so you can just open and refer that. So first let us see कितने स्पैन है अपने पास, 1 2 3 4, 4 स्पैन है. सपोर्ट्स भी कितने हैं, 1 2 3. सो सबसे पहले डेड लोड कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट स्पैन के लिए. ठीक है, सो व्हाट द आईएस कोड इज सेइंग, नियर द मिडल ऑफ द एंड स्पैन. ठीक है, मिडल ऑफ द एंड स्पैन, ये एंड स्पैन है तो इसके मिडल पे फाइंड आउट करना है. तो कितना है इधर, +1/12. सो दैट इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, +1/12. ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं एट द मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पैन. ठीक है, इंटीरियर स्पैन कितने हैं, ये और ये इंटीरियर स्पैन है मेरा, ये एंड स्पैन है. सो इंटीरियर स्पैन के मिडल पे कितना होना चाहिए, दिस इज +1/16, एंड हियर इट इज गिवन, आई हैव रिटन +1/16, +1/16. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? यस. Yes, sir. ओके, सो नाउ लेट अस सी सपोर्ट मोमेंट्स के लिए कैसे फाइंड आउट करें. सो फॉर सपोर्ट मोमेंट्स एट द सपोर्ट नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट. ठीक है, एंड सपोर्ट पे तो है नहीं मोमेंट, वी नो दैट 0 है. सो नेक्स्ट टू द एंड सपोर्ट पे कितना है, -1/10. सो हियर आई हैव रिटन -1/10. तो सेम, ठीक है, यू कैन डायरेक्टली राइट हियर ऑल्सो, इधर -1/10 है तो इधर भी -1/10 रहेगा. इधर +1/12 मैंने लिख दिया, तो डायरेक्टली यू कैन राइट हियर ऑल्सो +1/12. So -1/10 here I understood. Then at other interior supports, ठीक है, other interior supports apart from this support, other interior support कौन सा है, ये वाला. तो इधर कितना होना चाहिए, IS code the table is saying it is -1/12. So here I have written -1/12. I hope this is clear to everyone. Now let us move on to the live load coefficient. ठीक है, live load coefficient कैसे find out करेंगे. So इसके नीचे दिया है imposed load, मतलब live load coefficient. So again same thing will apply at the end span, middle of the end span पे कितना है, +1/10. तो middle of the end span +1/10. So immediately you can write here also +1/10. ठीक है, अगेन इधर से देखने की जरूरत नहीं. So +1/10. अभी मिडल, इंटीरियर मिडल स्पैन बच गया. एट द मिडल ऑफ द इंटीरियर स्पैन इट इज, फॉर imposed load it is +1/12. So here it is +1/12, here also +1/12. So live load coefficient का span, mid span moment we got. Now let us find out the support moment. For support moment it is the same only. ठीक है, at support next to the end support भी -1/9 है, interior support भी -1/9. So you can straight away write here -1/9, -1/9 and -1/9. ठीक है, so जो मैंने mid span कोएफिशिएंट है वो इधर लिखा है और सपोर्ट के लिए ऊपर लिखा है, so that you don't get confused. Now let us see how to find out the bending moment. So bending moment is found out by this. ठीक है, जो डेड लोड कोएफिशिएंट है इनटू डेड लोड इनटू एल इफेक्टिव स्क्वायर, और सिमिलरली लाइव लोड कोएफिशिएंट को भी ऐड करेंगे. सो लाइव लोड कोएफिशिएंट इनटू लाइव लोड इनटू एल इफेक्टिव स्क्वायर. ठीक है, इसके लिए टोटल डेड लोड बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, इसके लिए टोटल लाइव लोड बेंडिंग मोमेंट मिलेगा. वी वांट बोथ डेड लोड एंड लाइव लोड. आई हैव रिटन हियर सेपरेटली डेड लोड कितना आ रहा है अपना, टोटल 6.94. ठीक है, सो सेपरेटली यू राइट हियर सो दैट यू डोंट मेक मिस्टेक वाइल सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज. ठीक है, टोटल डेड लोड फैक्टर कितना है, 6.94, और टोटल लाइव लोड है 7.5. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट. सो डेड लोड कोएफिशिएंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, कितने पॉइंट्स पे निकालना पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, सो दैट इज द रीजन आई हैव ड्रॉन दिस फिगर. इफ यू डू दैट otherwise, so it will take lot of time. So at this point सबसे पहले ये मिड स्पैन पे निकालेंगे. So डेड लोड कोएफिशिएंट कितना है, +1/12, +1/12 I have written. और डेड लोड कितना है टोटल, 6.94, here it is mentioned. और एल इफेक्टिव अपना स्पैन है 3 मीटर्स, 3 स्क्वायर, प्लस लाइव लोड कितना है सेम पॉइंट पे, +1/10. ठीक है, कोएफिशिएंट सॉरी लाइव लोड कितना है टोटल 7.5, एंड एल इफेक्टिव इज 3.
So this will give me the total value of the bending moment at this point. ठीक है, is this clear how bending moment we have calculated, everyone? Yes. Yes or no? Yes, am I audible? Yes, sir. Okay. So similarly we will find out the bending moment at the support also. तो ये support ठीक है, पहले मिड स्पैन पे निकाल लेते, तो एट दिस मिड स्पैन अगर इधर 11.95 है तो इधर भी 11.95 रहेगा. सो नाउ एट दिस पॉइंट बेंडिंग मोमेंट कितना रहेगा, डेड लोड कोएफिशिएंट इधर कितना है +1/16, तो ये +1/16 चेंज हो जाएगा, और डेड लोड और ये तो सेम है. लाइव लोड कोएफिशिएंट एट दिस पॉइंट कितना है +1/12, तो इधर +1/12 हो जाएगा. सो देन इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट दिस वैल्यू 9.53. ठीक है, सिमिलरली ये सेम रहेगा. सो नाउ आफ्टर दिस यू विल फाइंड आउट बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट्स. सो एट द सपोर्ट्स व्हेन यू फाइंड आउट, तो डेड लोड कोएफिशिएंट इधर कितना हो जाएगा -1/10. ठीक है, तो उसको माइनस ही लेना है. ठीक है, -1/10. और सिमिलरली लाइव लोड कोएफिशिएंट इधर कितना हो जाएगा -1/9. so if you take this you will get -13.75. so if you get this values the same will be applicable here, -13.75. and then at this point again use the same equation and find out the value. Is this clear everyone? Yes, sir. Okay. So now we got the bending moment at all these points. ठीक है, 11.95, 13.75 and so on. Now let us see how to find out the shear force. ठीक है, shear force का भी table right exactly below this है, table 13 shear for coefficients. ठीक है, so now let us see how to use this. ठीक है, इसके लिए भी क्या दिया है, at the end support पे एक shear का coefficient है, then at the supports next to the end support है, और उसके बाद at all the other interior supports it will be this. So now let us see this. So dead load coefficient at this exterior support, ठीक है, कितना है, dead load coefficient 0.4 at the end support. ठीक है, so that's what I've written 0.4. now moving on to this at the support next to the end support. ठीक है, ये next to the end support है, तो इधर कितना है out इसमें. ठीक है, pay attention, outside and inner side. ठीक है, two things are mentioned, outer side and inner side. so outer side is this 0.6 और ये है inner side, तो इधर 0.55 आएगा. ठीक है, so 0.6 outer side, 0.55 inner side, 0.6 outer side, 0.55 inner side. ठीक है, सेम वंस यू हैव रिटन दिस. ठीक है, एग्जैक्टली इसका मिरर कर दो इधर, ये 0.4 इधर है तो 0.4 इधर, ये 0.6 इधर तो 0.6 और 0.55, फिर लास्ट में बचा क्या, ये वाला सपोर्ट. सो व्हाट द आईएस कोड इज सेइंग, एट ऑल द अदर इंटीरियर सपोर्ट्स इट इज सेम 0.5. ठीक है, so that I have written here 0.5, 0.5. I hope this is clear. Now let us see the live load coefficient. So live load coefficient के लिए at the end support कितना है 0.45. So I have written 0.45. After this at the support next to the end support कितना है 0.6. outer भी 0.6 है, inner भी 0.6 है. So there is no need to worry about this. So 0.6, 0.6 directly you can write. और इधर भी 0.45, इधर 0.6 और ये भी सेम है. All the other interior supports भी 0.6 है. So everything is 0.6 here. So now how to find out the shear force. ठीक है, so shear force is found out by using this equation, dead load coefficient multiplied by the dead load into L effective plus live load coefficient multiplied by the live load into L effective. So first at this point if I try to find out, this will be 0.4 into dead load कितना है अपना 6.94 and L effective is 3. So this you will get the value of 18.45. So I have written here the value of the shear 18.45. ठीक है, similarly at this point you will get, at this point you will get. ठीक है, once you have written this value here तो same इधर रहेगा, और एक बार इधर find out किया तो same इधर रहेगा, and then you will have to find out at this point. ठीक है, ये दोनों same ही रहेगा. Is this clear everyone? Shear force and bending moment.
ठीक है. So this is the only difference as far as your simply supported slab and continuous slab is concerned. So just analysis part थोड़ा different है, how to find out the bending moment and shear force. And then the next step is as usual check for flexure. ठीक है. चेक फॉर फ्लेक्चर करेंगे. एम आर ऑफ अ सिंगली रीइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर फॉर एफ ई 415. सो एम यू, हाँ, तो फ्लेक्चर चेक किसके लिए करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑब्वियसली वी विल चेक फॉर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किधर है, इधर नेगेटिव मोमेंट चेक करो, तुम्हारा मैक्सिमम है -13.75. सो दैट वैल्यू वी विल कंसिडर टू चेक फॉर फ्लेक्चर. So that I have considered 13.75, and then I have found out it comes it comes 70.58, so which is less than what we have provided, so hence it is safe. Okay, so check for flexure is done. Now calculation of reinforcement. ठीक है. calculation of reinforcement के लिए again, if you do this in the tabular form it will be very convenient for you, so that is the reason I have shown you in this tabular form. So what I have done, ठीक है, I have drawn this. ठीक है, we have these many points where we have bending moment: mid, top, mid, top, mid, top. So I've just mentioned the moments at the various points, and then we have to find out the steel for all these bending moments. Okay. So AST का formula क्या है, direct formula I am using 0.5 FCK BD upon FY 1 minus under root 1 minus 4.6 MU upon FCK BD square. So if you use this moment here 11.95, you will get this value of AST. ठीक है. सिमिलरली 13.75 MU की जगह पे सब्सटीट्यूट किया तो तुमको मिलेगा AST 417.13. सिमिलरली फाइंड आउट द AST रिक्वायर्ड फॉर ऑल द बेंडिंग मोमेंट्स. ठीक है, फॉर दिस बेंडिंग मोमेंट इधर, सो आई हैव रिटन accordingly so that it is easy to understand. So after finding out the स्टील, व्हाट वी डू, वी विल आल्सो फाइंड आउट द मिनिमम स्टील. ठीक है. सो मिनिमम स्टील से भी चेक कर लेंगे कि कहीं उससे कम तो नहीं है. सो इन दैट केस वील हैव टू प्रोवाइड द मिनिमम स्टील. सो आई हैव फाउंड आउट द मिनिमम स्टील. सो फॉर FE 415 वी नो दैट AST minimum is 0.12% BD. And then using a suitable diameter, we have already selected this diameter 10 mm. So we will find out the spacing required. ठीक है. spacing required का formula I've already mentioned, area of 1 bar upon area required into 1000. So इससे when you find out, so you will get this spacing. ठीक है. spacing at this point, this and all these points. ठीक है. Then once you find out the spacing, then we will check for the maximum spacing also. So 3D or 300 mm, whichever is less. So I have mentioned here. Okay, so as we can see that all these spacings are less than this only, so we will provide the spacing as per the actual what we have calculated. So now let us see the next step. So after once you get the maximum spacing, what you will do, you will provide the spacing. Okay, so 219 hai, so let us provide as 200 mm. So again this depends on you, so you can use 210 also, so I'm taking 200. ठीक है. So I am providing 200 mm spacing. So here I am providing 175, 188 आ रहा है तो उससे less provide करना पड़ेगा. So here 280, so I am providing 200. So either 205 I am providing 200. So either 280 है, so I am providing 200. Either 188, so again I am providing 175, and this is 200. ठीक है. So as far as possible, if you try to keep this uniformity, so it is always better when you draw the reinforcement detailing. ठीक है. So that is the reason I have kept this uniformity. So now let us move on to the next. ठीक है. Once you provide the spacing, फिर AST provided निकालना पड़ेगा. So AST provided, again using this same formula, ठीक है, you will get AST provided. This we have seen in the previous lecture. So once you get AST provided, then you will find out the percentage. ठीक है. PT percentage. So this percentage you got. Once you get the percentage, then you will find out the tau c value, shear strength of concrete. ठीक है. This you will get from page 73. ठीक है. This we have already done in shear, so you know how to find out tau c. Percentage दिया है, grade of concrete M20 है, so find out the value of tau c from the table. So once you get the value of tau c, here itself we will find out the value of stress also.
ठीक है, स्ट्रेस इन स्टील Fs is given by 0.58 Fy into AST required upon AST provided. This we have seen in पेज नंबर 36. ठीक है, पेज 36 पे दिस MFT का जो ग्राफ है इसमें ये इक्वेशन दिया है 0.58 Fy AST required upon AST provided. ठीक है, so from here you will find out this value Fs. तो स्ट्रेस का वैल्यू मिल गया at every point. So this is 219, this is 171, 171 and 219. ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड दिस. Fs का वैल्यू मैंने सब पॉइंट पे निकाला है. Yes, sir. ओके, सो नाउ हियर इफ यू नोटिस मैंने Fs का वैल्यू हर पॉइंट पे नहीं निकाला है. कैन यू सी दैट? यस. Yes, sir. Yes. So now can anyone tell me why I have done that? I hope everybody is paying attention. नहीं समझ रहा है सर. क्या नहीं समझ रहा है? सर ये कुछ लिख नहीं रहे ना, तो कुछ समझ भी नहीं रहा है क्या हो रहा है. ठीक है, तो पहले ये एक साथ सुन लो, फिर उसके बाद वी विल राइट एंड प्रैक्टिस. ठीक है, बिकॉज एक बार तुम लोग पूरा स्टेप्स देख लेंगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है एग्जैक्टली exactly. ठीक है, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व इन दिस. सो इफ यू एक्चुअली सॉल्व दिस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, सो व्हाट आई वाज आस्किंग वाज Fs मैंने इधर क्यों नहीं फाइंड आउट किया. सो Fs हम लोग क्यों फाइंड आउट करते हैं? Fs इज फाउंड आउट टू चेक फॉर डिफ्लेक्शन. एम आई करेक्ट? ठीक है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा? डिफ्लेक्शन तुम्हारे मिड स्पैन पे होगा. So that is the reason I found out this value only at the midspan and not at the supports. So deflection always you will check at the midspan. Is this clear everyone? सर So now फिर let से us, समझाओ ना. okay, ठीक है, Fs वैल्यू हम लोग कभी यूज करते हैं? लास्ट प्रॉब्लम में वी हैव सीन चेक फॉर डिफ्लेक्शन के लिए, राइट? चेक फॉर Yes, sir. डिफ्लेक्शन के लिए Fs निकालते हैं. तो डिफ्लेक्शन किधर होगा स्लैब में? तुम्हारे मिड स्पैन पे होगा कि सपोर्ट पे होगा? Mid span पे. हाँ, सो दैट इज द रीजन वी नीड ओनली Fs एट दिस पॉइंट. ठीक है, सपोर्ट्स की जरूरत नहीं है. So now let us move on to the next step, calculation of secondary reinforcement. ठीक है, so secondary reinforcement is nothing but the minimum reinforcement 0.12% BD. So using 8 mm diameter bar, select a suitable diameter. 150 mm square area है तो काफ़ी कम है. So we will select a suitable diameter. तो इसके लिए 8 mm is more than enough. Spacing I have found out, so it comes out to be 335 mm. So calculation of secondary reinforcement भी हो गया है और all these things in tabular form we have done. Now the next step is check for shear. ठीक है, सो ये जो सेकेंडरी reinforcement का और एक क्राइटेरिया था 5D और 450 विच एवर इज लेस. सो देयर फॉर प्रोवाइड 8 टॉर एट 325. तो ये 335 था, मैंने 325 प्रोवाइड किया. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चेक फॉर shear. सो चेक फॉर shear अभी हम लोग वी हैव हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ shear? वी हैव different values of shear at the various supports. So check for shear किसके लिए करेंगे? Obviously for the maximum value. ठीक है, so let us see maximum अपना shear कितना आ रहा है? 26 है maximum. So that value I have considered. ठीक है, so maximum shear का value मैंने consider किया 26 और उसके लिए मैंने check किया. So you will find out shear stress, same formula, same procedure what we have done previously. Then you will find out tau c. ठीक है, k का वैल्यू you will get on page 72. So we have to basically check tau v should be less than k into tau c or not. So most of the times you will see that this check for shear is always safe in slabs. So this comes out to be safe. Next we will do check for deflection. ठीक है, so check for deflection के लिए consider maximum fs. ठीक है, so maximum stress जहाँ पे रहेगा वहाँ पे possibility रहेगा deflection का. So वो maximum value मैं select कर रहा हूँ. So here you can see 219 is the maximum value. So considering maximum Fs,
सो पीटी परसेंटेज कितना है फॉर दिस एफएस 0.39 है. सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड आउट एमएफटी फ्रॉम द ग्राफ. ठीक है, लास्ट टाइम जैसे किया था सेम. ठीक है, परसेंटेज 0.39 है और एफएस कितना है, एक मिनट, एफएस है 219 और पीटी है 0.39. ठीक है, सो 219, सो 190 और 240 के बीच में रहेगा 219 और दिस इज 0.39 मतलब इफ आई से 0.4. ठीक है, सो ये लाइन से इफ यू गो अप और इसके बीच में से, सो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली एमएफटी एज 1.4. ठीक है, सो 219 इधर से इफ आई मेक समथिंग लाइक दिस, सो 1.6 के नीचे आ रहा है, 1.2 के ऊपर आ रहा है, सो अप्रोक्सीमेटली यू कैन कंसिडर दिस वैल्यू. ठीक है, स्केल इफ यू टेक द स्केल आईएस कोड पे स्केल लेके पेंसिल से भी अगर ड्रॉ किया तो तुमको मिल जाएगा एक पॉइंट. सो MFT is 1.4. So using this MFT I'm checking the depth. So depth is coming out to be 82, which is less than 100, so hence it is safe in deflection also. Okay, so then you can draw the reinforcement detailing. So you can also check for development length also, the same way as we have done before. So now let us see the reinforcement detailing in this. ठीक है, सो reinforcement detailing in continuous slab. ठीक है, सो आइदर यू कैन बेंड दीज बार. ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है उसको मैं बेंड करके इधर सपोर्ट पे लेके जा सकता हूँ या फिर मैं ऐसे भी प्रोवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस. सो दिस इज समथिंग विच आई फील वेरी कन्वीनियंट. सो दैट इज द रीजन आई हैव अडॉप्टेड दिस डिटेलिंग. ठीक है, सो व्हाट आई हैव डन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रेनफोर्समेंट डिटेलिंग. ठीक है, डिजाइन तो we have done the design. So अभी main steel क्या है, main steel let us see, diameter of the main steel कितना है 10 and diameter of the distribution is 8. So the main steel is provided throughout. ठीक है, मैंने देखा बॉटम बार जो है मैंने थ्रू आउट प्रोवाइड किया है. सो दैट इज नथिंग बट योर मेन स्टील. तो वो कितना है 10 टॉरेट 200. ठीक है, तो ये वाला जो 10 टॉरेट 200 है, सो यू कैन कंसिडर दिस जो सबसे लीस्ट वैल्यू है 10 टॉरेट 200. सो वो मैं थ्रू आउट प्रोवाइड कर रहा हूँ एट द मिड स्पैन. एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टील कितना है 8 टॉरेट 325. ठीक है, सो इधर मैंने सर्कल किया है, देखो ये वाला जो डॉट है ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है. सिमिलरली एट द टॉप ऑल्सो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज 8 टॉरेट 325. ठीक है, तो ये सपोर्ट पे मैंने इधर ये जो प्रोवाइड किया है. ठीक है, सपोर्ट के मोमेंट के लिए जो स्टील आ रहा है वो मैंने इधर प्रोवाइड किया है. सो लेट अस सी 10 टॉरेट 175 किधर था, 10 टॉरेट 175. ठीक है, स्पेसिंग प्रोवाइडेड है, देखो इधर 175 है स्पेसिंग. आर यू गेटिंग, ये सपोर्ट पे. ठीक है, तो ये सपोर्ट पे मैंने कितना प्रोवाइड किया है 10 टॉरेट 175. ठीक है, एंड दिस लेंथ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सपोर्ट यू कैन टेक दिस एज L/4. ठीक है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ द सपोर्ट से यू कैन टेक इट एज L/7. ठीक है, सो ये L/4 इज अप्रोक्सीमेटली 750. तो 750 तक यू कैन एक्सटेंड दिस बार और प्लेस दिस बार. ठीक है, ये 10 टॉरेट 175 कैसे आया समझ में आया, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एक्चुअली कैलकुलेटेड दिस वैल्यू. ठीक है, ये जो 175 स्पेसिंग है और 10 टॉर का बार हमने यूज़ किया है. तो ये सपोर्ट पे 10 टॉरेट 175 है, इधर 200 है, तो देखो थ्रू आउट 200 है, तो मैं एक ही बार थ्रू आउट प्रोवाइड कर सकता हूँ. अगर इधर बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता तो फिर मुझे कटेलमेंट करना पड़ता. आर यू गेटिंग एवरीवन? Yes, sir. Yes, okay. So here you can see, so what I have done, I have already told you कि for uniformity I have kept throughout the same. ठीक है, so इतने से पॉइंट के लिए मैं कटेल करूंगा, so that will not make any sense. So that is the reason I have जो बॉटम बार है थ्रू आउट मैंने एक ही स्पेसिंग रखा है, तो एक ही स्टील आएगा. और इधर टॉप पे 175 है इधर, और इधर 200 है. ठीक है, सेकंड सपोर्ट पे. तो मैंने ये रीइंफोर्समेंट डिटेल भी अकॉर्डिंगली मैंने शो किया है, क्योंकि इसके बाद भी वही सेम है. तो इधर कितना है थर्ड सपोर्ट पे, ये देखो थर्ड सपोर्ट पे इधर है 200 स्पेसिंग, तो मैंने प्रोवाइड किया है 10 टॉर एट 200. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये जो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग है समझ में आया सबको?
If you have any doubt in this, please ask me. यस, सो लैपिंग एज फार एज कंसर्न, ठीक है, इसके लिए भी तुम्हारे पास डिटेल में दिया है SP34 में. सो यू कैन रेफर SP34. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट शो यू. ठीक है, ये मैंने क्या किया, मैंने थ्रू आउट सेम प्रोवाइड किया है फॉर माई कन्वीनियंस. ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस वेरिएशन आता स्पेसिंग में तो मुझे फिर डिफरेंट इधर प्रोवाइड करना पड़ता, तो मुझे कटेल करना पड़ता. तो फिर उसके लिए you can just refer SP34. Okay. ठीक है, so SP34 is nothing but a handbook on reinforcement detailing. So if you see this, ठीक है, इसमें पूरा डिटेलिंग दिया है, 2 वे स्लैब, 1 वे स्लैब. सो फर्स्ट, ठीक है, ये, सो दिस ऑल्सो यू कैन यूज. ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने देखो कटेलमेंट किया है. सो यहाँ पे ये जो कटेल किया है, सो दिस डिस्टेंस इज 0.25 L1. ठीक है, सो हियर व्हाट दे हैव टेकन फ्रॉम दिस फेस ऑफ द सपोर्ट, फेस ऑफ द सपोर्ट 0.3 लिया है, मैंने सेंटर से L/4 लिया है. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज द सेम. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 0.1 लिया है और मैंने L/7 लिया है, सो विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.14. ठीक है, सो दिस डिटेलिंग ऑल्सो यू कैन फॉलो. अगर ये बेंड करना है तो बेंड करके ये वाला डिटेलिंग भी फॉलो कर सकते हो यूजिंग बेंट अप बार्स और यूजिंग स्ट्रेट बार्स. ठीक है, सो आई हैव फॉलोड दिस वन यूजिंग स्ट्रेट बार्स. ठीक है, सो यू कैन रेफर दिस फॉर द रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग. ठीक है, जितना पॉसिबल हो रीइंफोर्समेंट में सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज़ बेटर इन द एग्जीक्यूशन पार्ट. ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है. यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? Okay. Yes, anyone else?